जबकि अफगान उबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को लाहा खतरात से निमटने में नाकाम हो चुकी। TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने यह भी कहा कि अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें खित्ते को नुकसान पहुँचा रही हैं। TTP के जंगजू सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। हमारे पास सबूत हैं कि काबुल हुकाम दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। The TTP, the Tehrik-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters, is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. With safe havens close to our border, the TTP has conducted numerous attacks against Pakistan's soldiers, civilians, and institutions, resulting in hundreds of casualties. The TTP, perceived as enjoying Kabul's patronage, is fast emerging as an umbrella organization for regional terrorist groups whose objectives are to undermine the security and stability of all of Afghanistan's neighbors. Unfortunately, while fighting Daesh, the Kabul authorities have failed to address the threat posed to the region and beyond by other terrorist groups such as Al-Qaeda, the TTP and the Majid Brigade, which are present in Afghanistan. The over 20 terrorist organizations present in Afghanistan.